Good morning, everyone. Hope you all are well at your home and studying as per the syllabus. As far as our English second is concerned, we have completed the first term syllabus, all the question answers, word meanings, objectives, and the explanations. So, before moving to the new chapter, I would like to just brief you the previous chapters which we have studied, and I would like to give a brief description or the explanation of those chapters so that the things become more and more clear to you. So we will start with our poem My Shadow. जो हमने सबसे पहले पोएम पढ़ी My Shadow, I will discuss with you today in this video about the main points of the poem. As you all know, the poem is written by the poet Robert Louis Stevenson. He was a great Scottish novelist and writer who has written many famous poems and books. This poem is about the description of a child's imagination. इसमें पोएट ने इस पोएम को चाइल्ड्स पर्सपेक्टिव से लिखा है, मतलब कि एक चाइल्ड एज अ पोएट, एज बीइंग अ चाइल्ड, हर बात को वो एक्सप्लेन कर रहा है. हाउ अ चाइल्ड इमेजिन्स द थिंग्स, व्हाट आर द इनोसेंस इमेजिनेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर चाइल्ड, जो किसी भी एक चाइल्ड के होते हैं या किसी भी एक बच्चे के. व्हेन ही कम्स टू द अर्थ, ही सीज द न्यू थिंग्स एंड हाउ ही थिंक्स अबाउट देम, हाउ ही इमेजिन्स, develops his own innocence imaginations about those things. The poet is discussing about the shadow. We all know what is shadow. We must see our shadow. हम अपनी shadow को देखते हैं. Everyone has their shadow. There is a science. We know after studying and growing up, we know there is a science behind the formation of the shadows. But the poet, as being a small little child, as a kid, he is not aware of that science. उसको ये science कुछ नहीं पता. He just seeing the shadow and thinking it to be another child like himself. वो उसे अपने ही तरह एक अलग बच्चा देखता है कि जैसा वो है वैसा ही उसके साथ उसकी शैडो है, जो ऑलवेज उसको फॉलो करती है, जो ऑलवेज उसके साथ रहती है. wherever he goes, wherever he is going out of the house, he is coming back inside, wherever he is going, whatever he is doing, the shadow is following him exactly like that way. वो उसको उसी तरह से फॉलो कर रहा है, उसी तरीके से वो उसके साथ वैसे ही काम कर रहा है. So things are being described. The poet here has used a literary device, the personification. उन्होंने personification का बहुत ही क्लियर यूज किया है by creating a real image of the shadow. इस पोएम में शैडो को पोएट ने एक रियल मैन की तरह क्रिएट किया है और बताया है, इस तरीके से उसकी इमेज रखी है. लाइक अ शैडो इज ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, लाइक अ रियल एंटिटी. उसको इस तरह के वर्ड्स से डिस्क्राइब किया है जैसे कि वो एक साइंस फिनोमेना न होके बल्कि एक ह्यूमन बीइंग है, लाइक अस. So if you will, when you will read the chapter, when you will read the poem, you will find those words in which you can find out how the poet has used that personification, has personified the shadow being a real man, and he has described about the shadow like you can see some of the lines. For he sometimes shoots up taller like an Indian rubber ball and sometimes goes so little that there is none of him at all, describing about the size and the growing size, which is very unusual. हम human beings जैसे normally grow करते हैं, कभी if we are growing, we get taller and taller. हम एक एज तक टॉल होते हैं, लंबे होते हैं. बट about shadow is describing that sometimes the shadow is going very high, sometimes appears very little, and sometimes appears not at all. कभी कभी वो बहुत ऊंचा होता है, कभी कभी बहुत लंबा होता है, कभी कभी शैडो बहुत छोटी होती है और कभी कभी दिखता ही नहीं है. शैडो doesn't appears at all. So the poet is also describing the shadow like he stays so close behind me. He's a coward, you can see.
Coward means a person who is not brave, जो डरपोक होते हैं, जो बहादुर नहीं होते हैं, जिनमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है. We say that this particular boy is a coward means कि वो डरपोक है, अकेले कहीं आने जाने से डर सकता है, वो किसी चीज़ से डर रहा है. तो द पोएट इज ऑल्सो डिस्क्राइबिंग द शैडो एज अ कावर्ड थिंग. एज अ कावर्ड मैन मीन्स कि वो हमेशा, क्यों? क्योंकि वो हमेशा पोएट से चिपक के रहता है, इसीलिए पोएट उसे कावर्ड समझ रहे हैं कि वो बहुत ही डरपोक है, वो अकेले नहीं रह सकता. दैट्स वाई ही ऑलवेज स्टेज क्लोज टू हिम. And how he always follows wherever he is going, whenever if he is going to sleep, when he is rising up, all these things the poet is describing very clearly in the shadow poem, in a very beautiful manner. He has described the shadow, and also described the thing about the childish perceptions, about the child's imagination, about their excitement, the pleasure. जब भी कोई एक बच्चा कुछ नई चीज़ें देखता है या करता है तो उसे जो खुशी मिलती है, जो एक्साइटमेंट होती है उसको और करने की, दिस इज़ द ह्यूमन क्वालिटी, द नेचर ऑफ स्पेशली द स्मॉल चाइल्ड. उस चीज़ को भी डिस्क्राइब किया है कि जब वो शैडो को देख रहा है तो वो उसको और ध्यान दे रहा है कि वो कैसा है, उसकी साइज़ कैसी है, वो जहाँ जा रहा है उसके साथ उसकी शैडो आ रही है कि नहीं. इसीलिए जब व्हेन द पोएट हैज़ ऑल्सो रिटन अ लाइन, वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन वॉज अप, आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटरकप, बट माई लेजी लिटिल शैडो like an errant sleepyhead had stayed at home behind me and was fast asleep in bed. तो यहाँ पे पोएट ने क्या बताया है कि पोएट जो है वो जल्दी उठता है, तो चाइल्ड जो है वो जल्दी उठ के बाहर जाता है, तो वहाँ वो शाइनिंग ड्यूज ऑन द एवरी बटरकप इज़ अ फ्लावर, वो देखता है हर जगह. बट एट दैट टाइम ही इज़ नॉट सीइंग हिज शैडो विथ हिम. वहाँ पे वो अपनी शैडो को अपने साथ नहीं देख रहा है. सो वॉट ही इज सेइंग दैट हिज शैडो इज अ लेजी मैन. वो एक लेजी मैन है, इसीलिए वो जल्दी नहीं जग रहा. सो एट दैट टाइम द चाइल्ड बीइंग, और द पोएट बीइंग अ चाइल्ड, यहाँ पे वो अपने शैडो को बहुत अच्छे से गौर से देख रहा है कि वो हर जगह उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं. और जब एक मॉर्निंग वो उसे नहीं देखता है अपनी शैडो को, तो वो उसे लेजी मैन की तरह डिस्क्राइब कर रहा है. सो दिस इज द चाइल्ड्स qualities, that they find the excitement in doing new things. After seeing new things, they get the pleasure. This is basically about this poem. और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं. And if we consider look after the hard words, some of the words shoots up means growing very quickly in a particular direction. किसी एक डायरेक्शन में तेज़ी से ग्रो करना. India rubber is the natural rubber. Notion means idea or understanding of something. किसी चीज़ के बारे में कोई आइडिया होना या किसी चीज़ की अच्छी समझ होना. Coward, as I explained, is a person who is not brave enough. Dew are the shining water droplets which we see during the winter season. जब हम सुबह उठते हैं तो हम कुछ ओस की पानी की बूंदें देखते हैं लीव्स पे, ऑन फ्लावर्स, तो वो बेसिकली ड्यू होती है. Errant is a word which is to describe the person who is being bad or naughty. उनके लिए describe किया जाता है. At the back of the chapter you can see all the hard words have been given. Question answers have also been provided. Go through it. We will meet next in our next class. Until then, goodbye. Thank you.